नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अमेजन बेसिक्स का न्यूली लॉन्च्ड एयर प्यूरीफायर। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे इस न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट के और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, अब देर न करते हुए जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, अब हम इसको बॉक्स से निकाल लिया। नाउ लेट्स देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वेरी सरप्राइजिंगली इसके अंदर इसके नीचे व्हील्स लगे, विच इज़ रियली रियली वेरी कंफर्टेबल। ये हमने पहले कभी किसी प्यूरीफायर में आज तक कभी नहीं देखा। मे बी द बिगर वंस में है, पर होम मेड वाले के लिए दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंगली वेरी फ्रेंडली फीचर। इसके साथ आया है एक मैनुअल, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स चेक आउट वेरियस थिंग्स। सबसे पहले एक वेरी सरप्राइजिंग एंड थिंग इज इसमें लगे ऐसे दो फिल्टर है, ना ये पार्ट, एक हेपा फिल्टर इस साइड और एक हेपा फिल्टर इस साइड। ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड। ऐसा हमने कभी किसी और फिल्टर्स में इतने लो प्राइस में दो फिल्टर के साथ एक एयर प्यूरीफायर फ्रॉम अमेजन इज़ ट्रूली वेरी सरप्राइजिंग। दोस्तों, मार्केट में एक हेपा फिल्टर कॉस्ट अबाउट 3000 रुपीज़ और इसमें जो दो लगे हुए हैं, तो फिल्टर की कॉस्ट इटसेल्फ इज 6000, बट सरप्राइजिंगली अमेजन ने इसे काफ़ी लो प्राइस में लॉन्च करा है। And you should really avail this opportunity, I feel so. So let's check out without any further delay. ये फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले हम इसके कवरिंग निकालते हैं। एक फिल्टर और सरप्राइजिंगली इसमें कम्स विद प्री फिल्टर। ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ होता है। ये आपके हेपा फिल्टर को काफ़ी लॉन्ग लाइफ देता है। बहुत सारे आपको प्यूरीफायर में ये नहीं दिया जाता, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अमेजन ने इसे इंक्लूड करा। दिस इज द मैसिव फिल्टर एंड कम्स विद अ कार्बन फिल्टर एट द बैक। बस सामने पूरा टोटल फ्रंट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हेपा फिल्टर। चेक आउट दूसरी तरफ देखते हैं। This is very, very surprising and very helpful. दोस्तों, एक नहीं दो filters, carbon and HEPA, and that such massive size. I'm absolutely happy about this product already. This is the fan through which the air will get sucked into, और इसके top से आपकी हवा बाहर जाएगी। And this is the front panel. इसमें कई सारे फीचर्स हैं। So कई सारे buttons, dimmer, PM 2.5। oh, इसमें ion generation के फीचर्स हैं, which is again absolutely great feature. Fan or more and on off button. And okay, let's check out this tip as well.
surface removal, and here is the final side. You can see very clean and very safe. Let's put it back. Now let's see if it works without the filters. Sometimes many of them work, but many does not. तो दोस्तों लेट्स इसके ऑन किया जाए, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। बहुत सारे फिल्टर्स प्यूरीफायर में ऑप्शन होता है कि अगर आपने फिल्टर नहीं लगाया तो ये टर्न नहीं होता। तो लेट्स चेक इफ दिस डाई हैज द सेम फीचर, वरना देखते हैं ऑन होता है। Okay, we have some lights and it says E1. So I think this is a very good sign. It is E usually means error. So it says error 1. So most likely आपकी ने इसमें फिल्टर्स नहीं लगाया होगा, इसलिए आपको एरर दिखा रहा है। तो हम इसे ऑफ करते हैं and let's add the filters and see it works perfectly. Absolute another nice feature. इसके साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने एक हवा लीकेज को रोकने के लिए एक अलग सा बैंड दिया है इसके साथ में, which is again another feature which is not really available in India. Okay. We are almost done fixing the filters. Take them. Okay. Let's turn on. Perfect. जैसे कि आप देख रहे थे, क्योंकि हमने पहले फिल्टर नहीं लगाए थे तो उसने डिटेक्ट कर लिया था। It shows how quality conscious Amazon basics is, and is showing the amount of PM2 as 105 and gaseous pollutants is calculating most probably, and इसने ये भी इंडिकेटर दे रखा है कि आपने हेपा फिल्टर की लाइट्स भी ऑन है और प्री फिल्टर भी ऑन है, which is again another good feature. At least is able to detect कि आपने प्री फिल्टर लगाया कि नहीं लगाया, हेपा फिल्टर लगाया कि नहीं लगाया. It can detect both of them. Most I can say it is surprisingly absolutely great deal at such a low price. It's an unbelievable deal, and you should get it as soon as you can. I think मैंने कई सारे प्यूरीफायर यूज़ करे पिछले 10 सालों में, and I can say this is one of the best. And as you can already see, जैसे कि आप देख रहे हैं, already हमारा PM2 लेवल कम होना शुरू हो गया है और हमारा यहाँ के एरिया is around like 500 square foot all the way to the hall, and I think this is an absolute great feature
24. Let's check at the speed B. Okay. This is the medium. F5. Okay. F9 is on off as well. Dimmer. डिमर आपका काम आता है रात के वक्त जब आप सोते हैं आपको अगर लाइट से परेशानी होती है तो यू कैन टर्न ऑफ द लाइट और डिम द लाइट दैट्स अनदर ग्रेट फीचर मोड ये वाटर मोड या द स्लीप मोड एंड एक टर्बो मोड जब आप इनिशियली जैसे ही आप आते हैं बट आपको इनिशियली जब आप इसको ऑन करते हैं आपको लगता है कहीं कोई इंजन का है तो यू कैन टर्न ऑन द टर्बो मोड. Otherwise, it's best to always keep it at the auto mode. As you can see, PM2 level जो है already 65 पे आ चुका है, and I think it is a great thing. Namaskar, I hope you like our video, and please do subscribe for further info and comparison with other purifiers.